their impact on our health, and it is a very topic because about I remember in 2011 it said that there are about 40 million hypothyroids in India, and that was in 2011. So now it would have doubled, I'm sure, and it so happens that there is some kind of an ethnic in thyroid illnesses. The southern part of India perhaps has more such conditions. Hello? Hello. Hello, Sir, ma'am. Am I audible? Yeah, sir. Voice was breaking actually. Okay. So over to Dr. Purnima for her discourse on thyroid disorders in iodine. Thank you, sir. Thank you, sir, for giving me the opportunity to speak on this platform, and hope I'll give some idea about the thyroid disorders and iodine. So actually, thyroid, सबसे पहले I'll come to what is thyroid, because many people come to me and they say, ma'am, what kind of thyroid I have? क्या मुझे गले का thyroid है या मुझे blood का thyroid है? So what exactly is thyroid gland and how is this iodine connected to it? It's not getting slide. Up. So what is the thyroid? Sorry for the connection problem. Thyroid gland is actually a butter shaped, एक छोटा सा butter shaped gland. It is located in the front of the neck. Am I audible? Am I audible? Okay. So it is a small gland which is situated in front of the neck, and ये mainly produce करता है दो तरह का hormones. That's right, sure. Slide show. What on slide show? Sound unmuted. Yeah, actually. Should I change the system? Slide show is important. We declare
Should I speak on that? Decline. हम दोनों राइट क्लिक उधर करेंगे ना, that side. इधर Listen. इधर Listen. it is my pen drive. इसमें लाओ ना. Are you ready, Dr. Purnima? Sir, I am ready, but actually slides are not moving. अब decline, now it is decline नहीं हो रहा है, you decline. नहीं, मेरे से नहीं. From your side, I think decline हो जाएगा. Voice inputs, okay? Would that be fine? क्या बोल रहे हैं? Dr. Purnima, Yes, sir. Yes, sir. Can slides are visible? Slides are not moving, sir. no, I think if we are having a technical issue, then can I share the Yes, sir. Should we send the slides to sir? presentation on my side and from your Yes, sir. Yes, sir. We have some technical issue. Please wait a while. No, it is feeling I can imagine to see the box. नहीं, should I give the pen drive में है? On your computer? Okay. Man, you keep on speaking. Okay. Man, do not worry about the slide. Keep on speaking. अच्छा. ठीक. But it's a fine. Controlling. Should I? Okay, so sorry for the disturbance. So thyroid gland is situated in the lower part of the neck. एक butterfly shaped का gland होता है, and its main function is to produce the thyroid hormone, which are called as T3 and T4. तो दो main hormones thyroid बनाता है, which is T3 and T4. And structures इसके कुछ ऐसे दिखते हैं, which I will be taking later. Thyroid hormone से जो अब ये T3 and T4 बने, they will go to the body with the help of the blood and to the other organs. और वहाँ जाकर it plays a very important role in the metabolism of our body. Actually हमारी body को warm रखना, brain, heart, muscle and all other organs के proper functioning के लिए thyroid hormones बहुत ज़्यादा जरूरी हैं. और बच्चों के केस में for growth and development we need a proper T3, T4 hormones to be present in our body. Then second question comes, why this iodine is important? Always we say thyroid and iodine. So iodine is actually a micronutrient which is present in the soil and it is important for the formation of the thyroid hormones. ये structure मैंने आपको पहले भी बताया था, this T3 and T4 and आप देख रहे हैं iodine. So this iodine is very important for the formation of the thyroid hormone. Thyroid को बनने के लिए हमें iodine चाहिए, and so it is important for the mental and physical development. But the problem is that this iodine is
not present in our body means we cannot make iodine. हमें बाहर से iodine लेना पड़ता है through our diet. So where is this iodine comes from? तो छोटा सा cycle मैं आपको बताऊंगी. That iodine on this earth is mainly present in the oceans. The ocean is the main reservoir of the iodine. When sunlight falls over the ocean, तो ये iodine convert होकर atmosphere में आ जाता है. And then rainfall के through it goes back to the land. तो वो वापस से soil के अंदर चला जाता है. Now whatever the plants which are growing on this soil, ये लोग iodine इस सॉइल से लेते हैं एंड थ्रू द प्लांट जो हम खाना खाते हैं या जो हम डाइट में ले रहे हैं, दिस आयोडीन इज कमिंग टू आवर बॉडी. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक द प्रॉपर अमाउंट ऑफ द आयोडीन. So this is iodine is present naturally in soil and sea water. The availability of the iodine, जो फूड के अंदर अवेलेबिलिटी है आयोडीन की, वो कहाँ पे डिपेंड कर रही है? इट विल डिपेंड ऑन द सॉइल in which the food is growing. So there are certain areas where iodine is rich and there are certain areas जहाँ पे iodine की कमी होती है, तो plants में भी कमी होती है. तो बॉडी के अंदर adequate iodine जाए, इसके लिए important है कि हम बाहर से iodine को किसी ना किसी फॉर्म में लें ताकि थायराइड हार्मोन्स का फॉर्मेशन ठीक से हो. So what are the sources which are rich in the dietary iodine? So these are the common iodized table salt, आप सभी लोगों ने सुना है. Then cheese is a good source of iodine. Seafood, if you are non-vegetarian, then seafood is a very good source of iodine. Cow milk, egg, and yogurt. So these are the common foods which are rich in the iodine sources. So what is the recommendation of iodine? The WHO has recommended there are certain levels like जो बड़े लोग होते हैं, we should take around 150 microgram per day of iodine. प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में आयोडीन की रिक्वायरमेंट की मात्रा और बढ़ जाती है, दैट इज 250 माइक्रोग्राम पर डे, एंड चिल्ड्रन में इट इज लेस, 90 to 120 माइक्रोग्राम पर डे. So what happens when iodine deficiency is there? अगर आयोडीन की कमी होगी तो डेफिनेटली थायराइड हार्मोन्स जो बन रहे हैं वो प्रॉपर तरह से नहीं बन पाएंगे एंड बॉडी में थायराइड हार्मोन की कमी होगी. और हमने पहले आपको बताया कि थायराइड हार्मोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द होल बॉडी मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो इट कैन प्रोड्यूस बहुत सारे तरह की बीमारियां आ सकती हैं एंड इन सभी बीमारियों को हम बोलते हैं आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स. So what are the iodine deficiency disorders? Goiter. तो goiter आपने देखा हुआ है कि आपका जिसको हम हिंदी में गेंदा भी बोलते हैं. तो अगर आयोडीन की कमी होती है देन हमारा थायराइड हार्मोन क्या करता है, थायराइड ग्लैंड ज़्यादा से ज़्यादा थायराइड हार्मोन बनाने के लिए उसकी साइज और बढ़ जाती है एंड वो प्रोड्यूस करता है एक goiter which we call the condition goiter. तो जैसे जैसे ये बड़ा होगा आपके धीरे धीरे ये प्रॉब्लम्स करने लगता है, जैसे खाने में गटकने में दिक्कत होना, सांस में दिक्कत होना, खांसी आना, और कई बार थायराइड हार्मोन की कमी होकर हाइपोथायराइड भी कर देता है. सेकेंड इज हाइपोथायरॉयडिज्म. हाइपोथायरॉयडिज्म आप सभी को पता है, कई लोगों को बोलते हैं हमें थायराइड हो गया, मोटा होने वाला थायराइड हो गया, विच इज एक्चुअली हाइपोथायरॉयडिज्म. तो हाइपोथायरॉयडिज्म जब हमारे अंदर थायराइड हार्मोन्स कम बनने लगे, T3 और T4 लेवल्स कम हो जाते हैं, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपोथायरॉयडिज्म. प्रेजेंट कैसे करेगा? इसके कई तरह की कंप्लेंट्स आती हैं, जैसे थकावट ज़्यादा होना, पहले उतना काम कर लेते थे अब नहीं कर पाते, वजन बढ़ना, या फिर डिप्रेशन, मन ठीक नहीं रहना, सुस्त रहना, बालों का गिरना, कब्जी रहना, ठंड ज़्यादा लगना, या महीने में गड़बड़ होना. अगर इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं जो पहले नहीं थी तो इम्पॉर्टेंट है कि हम थायराइड हार्मोन का चेकअप कराएं, क्योंकि हो सकता है हम हाइपोथायराइड हो रहे हों. देन कम्स द प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी में थायराइड हार्मोन्स का होना ठीक अमाउंट में बहुत ज़रूरत होती है.
क्योंकि जो बच्चे का विकास है वो मदर के थायराइड हार्मोन्स पर डिपेंड करता है। अगर मदर के अंदर थायराइड हार्मोन ठीक होगा तो बच्चे का जो भी विकास है, आपका ब्रेन का विकास है, वो सही प्रकार से हो सकता है। अगर प्रेगनेंसी में आयोडीन डेफिशिएंसी हुई तो मिस कैरेज मतलब अबॉर्शंस होने के चांसेस रहते हैं। स्टिल बर्थ, बच्चे का डेथ होने का चांस हो सकता है। यार ये जा रहा है। और कंजेनिटल या कुछ उसके अंदर कंजेनिटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो प्रेगनेंसी में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम थायराइड हार्मोन्स चेकअप कराएं और थायराइड हार्मोन्स को नॉर्मल रखें। कमिंग टू, आपकी स्क्रीन कैसे दिख रही है? शो मी द स्क्रीन। स्क्रीन शो कर दीजिए आपके कंप्यूटर पे। ये तो सिर्फ अपन देख सकते हैं। तो आयोडीन का इफेक्ट बच्चों पर, अगर बच्चे में, अगर माँ में कमी होगी तो बच्चे में भी थायराइड हार्मोन्स का असर आएगा। थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से उसके अंदर मेनली जो है मस्तिष्क का, जो ब्रेन का विकास होता है वो अफेक्ट हो जाता है। तो ब्रेन का इफेक्ट, जब ब्रेन का इफेक्ट हो सकता है तो बच्चा लेटर ऑन मन बुद्धि या मेंटल रिटार्डेशन जिसे हम कहते हैं वो हो सकती है। उसको सुनने में प्रॉब्लम या बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है। और अबॉर्शंस, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अबॉर्शंस भी हो सकते हैं। ये जस्ट एक आपको जस्ट ये आपका एक फिगर मैं बता रही हूँ कि जब आयोडीन सफिशिएंट होता है ब्रेन में, देन हमारा ब्रेन का विकास बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है। और अगर ब्रेन में आयोडीन की कमी है तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये प्रॉपर विकास नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज नॉर्मली हमें बर्थ के दौरान पता नहीं चलती, बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है हमें लगता है कि वो बाकी बच्चों जितना नहीं कर पा रहा है, इतना थोड़ा सा इंटेलिजेंट कम है। तो इट कुड बी कि उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आयोडीन या थायराइड हार्मोन्स की मात्रा की कमी रही हो। कहा तो ना प्लीज। फिर बच्चे में क्या दिक्कत हो रही है एक्चुअली में? नहीं नहीं हो रहा है इधर से स्लाइड्स। नहीं चल रहा है। मैंने को वीडियो करने के बाद फिर से अपडेट से करो। स्क्रीन नहीं दिख रही है। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है? नहीं ये वाला नहीं, पीछे वो। सही कर रही है। तो आयोडीन डेफिशिएंसी नियोनेट्स, बच्चों के अंदर जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें हमें कैसे पता चलता है? तो या तो बच्चे को गोइटर, जैसे पहले बताया गोइटर हो सकता है। बच्चा का
अगर आप उसे देखेंगे तो या तो बच्चा ठीक से खाना नहीं खा रहा है, रो ठीक से नहीं रहा है, स्किन बहुत ड्राई है, या उसका मतलब फेस का जो डेवलपमेंट है वो इतना अच्छा नहीं है। अगर ऐसा कुछ आपको लगता है तो इट इज़ बेटर कि आप डॉक्टर के पास जाएं, उसका थायराइड का चेकअप कराएं। अगर आयोडीन डेफिशिएंसी बड़े बच्चों में होती है तो वापस से उनके अंदर भी हाइपोथायरॉइड हो सकता है, बच्चा सुस्त हो सकता है। पेरेंट्स नोटिस करेंगे कि बच्चा पहले बहुत अच्छे से खेलता था पर अब थक जाता है, या फिर वो ध्यान नहीं दे पा रहा है, पढ़ाई में पीछे जा रहा है, या फिर उसका ग्रोथ या विकास उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है, दैट इज रिटार्डेड फिजिकल डेवलपमेंट और गोइटर। अगर ऐसे कोई भी साइंस एंड सिम्टम्स अगर दिखते हैं बच्चों में तो हमें उनका थायराइड का चेकअप जरूर करा लेना चाहिए। और बड़ों में अगर आयोडीन डेफिशिएंसी या थायराइड हार्मोन की मात्रा की कमी होती है तो उनके अंदर भी स्लोनेस ऑफ फंक्शन, जैसे पहले मैं काम बहुत अच्छे से कर लेता था पर अब मैं अच्छे अच्छे नहीं कर पाता, तो उसको कंडीशन को हम बोलते हैं इम्पेयर्ड मेंटल फंक्शन, वो हो सकता है। हाइपोथायरॉइड, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हाइपोथायरॉइड के जो भी सिम्टम्स, सुस्ती रहना, थकावट होना, वजन बढ़ना, अगर ऐसा कुछ भी तो वो बड़ों में आ सकता है। उसके अलावा गोइटर हमें कोई भी एज में आ सकता है। अगर गले में आपका गोइटर है तो इट इज बेटर कि हम चेकअप करा लें। एक कंडीशन होती है कॉल्ड एज क्रिटिनिज्म, ये जस्ट मैं आपको आजकल इतना देखने को नहीं मिलती, क्योंकि पहले जब बहुत सिवियर आयोडीन डेफिशिएंसी अगर होती है, स्पेशली उन एरियाज में जहाँ पर सॉइल में भी आयोडीन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, उस टाइम पर इरिवर्सिबल मेंटल डैमेज होता है जिसको हम कहते हैं क्रिटिनिज्म। तो यहाँ पर आपको ये जस्ट बताने के लिए कि इट कैन बी वेरी सिवियर, कि बच्चे को न्यूरोलॉजिकल क्रिटिन हो सकता है, मेंटली रिटार्डेड, डेफ एंड म्यूट हो सकता है, चलने में दिक्कत हो सकती है। तो ये बहुत ही सिवियर फॉर्म ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है विच इज लेस कॉमन नाउअडेज। Now, why does iodine deficiency disorders occur? तो वन आई हैव ऑलरेडी सेड कि हमने खाने में लो डाइटरी इनटेक, अगर आयोडीन हमने कम मात्रा में लिया है तो लो आयोडीन लेवल्स, अगर हम जैसे अगर प्लांट्स हमारे जिस जगह पर हम रहते हैं अगर वहाँ की सॉइल में ही आयोडीन की कमी है तो बहुत चांसेस है कि हम जो खाना खा रहे हैं उसमें आयोडीन की कमी हो सकती है। या अगर हम सी फूड लेस कंज्यूम करते हैं तो हो सकता है कि हमारे खाने के थ्रू हम कम आयोडीन ले रहे हैं। दूसरा कारण है कि हम आयोडीन तो ठीक से ले रहे हैं पर कुछ चीजें ऐसी ले रहे हैं जिस वजह से आयोडीन थायराइड हार्मोन ठीक से नहीं बना पा रहा, तो ऐसे तत्वों को हम बोलते हैं गोइट्रोजेंस। तो देर आर मेनी पेशेंट्स हु कम टू मी एंड आस्क मैम क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या नहीं खा सकते हैं। तो वैसे अगर हम बैलेंस डाइट, मतलब हर सब्जी को मॉडरेट अमाउंट में खाएं, तो आप के लिए कोई भी खाने, आप कोई भी सब्जी खा सकते हैं। बट अगर कोई भी चीजें ज्यादा मात्रा में नहीं, जैसे केल जूस है, अगर आप 2 से 3 ग्लास रोज पियेंगे तो हो सकता है कि वो थायराइड हार्मोन की कमी करे। बट अगर हम मॉडरेट अमाउंट में लेंगे तो ये वाली सब्जियां भी आपके थायराइड हार्मोन को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगी। So as such, if you take balanced diet, then there is nothing that we should restrict. You can take all kind of vegetables. So what is the disease burden? Actually, sir जैसे बता रहे थे, when he read in 2011, तो आज भी थायराइड हार्मोन डेफिशिएंसी काफ़ी कॉमन है और आयोडीन डेफिशिएंसी उसका मेन कारण है। अगर देखा जाए तो 2 बिलियन पीपल are at risk of iodine deficiency because of insufficient dietary intake. और इंडिया एज सच हमारे अंदर आयोडीन की थोड़ी, पूरी ही सॉइल में आयोडीन की कमी है, इसलिए अगर हम ऊपर से आयोडीन नहीं लेंगे ठीक से मात्रा में तो आयोडीन डेफिशिएंसी हो सकती है। तो इन इंडिया में एट प्रेजेंट 350 मिलियन पीपल आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर एंड 70 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम आईडीडी। So this is just to show you that India is actually a place where moderate iodine deficiency is present in the soil. And if you see the map, this Himalayan belt is there, which is, that is the main place where iodine deficiency is there. But in all the parts of the India,
iodine deficiency can be seen. So how to diagnose iodine deficiency? कैसे हम diagnose करेंगे कि iodine deficiency है? So there are certain methods, but ये methods ज़्यादातर हमारे पॉपुलेशन लेवल पे स्टडी करने के लिए है, जैसे यूरिन आयोडीन कॉन्सेंट्रेशन, यूरिन में आयोडीन की मात्रा को नापना, गोइटर रेट, गोइटर कितना गोइटर पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, या फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड थायरोग्लोबुलिन। यूरिन आयोडीन कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअली पॉपुलेशन लेवल पर होता है, और हम बच्चों के अंदर कर कुछ सैंपल्स लेते हैं बच्चों के अंदर, और अगर ये मात्रा 100 से 200 के बीच में आती है, इसका मतलब हमारा एरिया आयोडीन सफिशिएंट है, और अगर वो इससे कम है, लेस देन 20 है, मींस आयोडीन डेफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है। सिमिलरली गोइटर रेट हम देखते हैं कितनी पॉपुलेशन में या कितने लोगों में उस जगह पर गोइटर प्रेजेंट है, और उस हिसाब से पता करते हैं कि आयोडीन डेफिशिएंसी उस एरिया में है या नहीं। ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि दिस आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स कैन बी प्रिवेंटेड, मीन्स हम इन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, अगर हम प्रॉपर आयोडीन अपनी मात्रा खाने में लें तो। सो हाउ कैन बी प्रिवेंटेड? तो वन इज, अगर डेफिशिएंसी सॉइल के अंदर ही है तो प्लांट्स के अंदर होगी, बट इफ वी डू द फूड फोर्टिफिकेशन इज दैट हम आयोडीन को कुछ फूड के अंदर डाल दें ताकि वो सारे लोग ले पाएं, एंड द कॉमनेस्ट एग्जाम्पल इज salt and the other examples are bread, milk and water. तो salt iodinization एक्चुअली सभी जगह बहुत फॉलो करते हैं क्योंकि ये सिंपल है और कॉस्ट इफेक्टिव, इनएक्सपेंसिव है। सॉल्ट के अंदर आयोडीन, सॉल्ट सभी लोग लेते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ी मात्रा में डालने पे कलर चेंज नहीं होता है और मीन्स टेस्ट चेंज नहीं होता है, तो इट कैन बी इजीली गिवन टू होल पॉपुलेशन। So what is important when you are consuming the iodized salt? मतलब salt, आजकल मैंने देखा है कई लोग iodine salt नहीं, iodized salt नहीं लेते, they use what we call the सेंधा नमक and काला नमक, because they think कि उससे BP बढ़ जाता है, but उनके अंदर आयोडीन एडेड नहीं होता है, इसलिए आयोडाइज सॉल्ट ही यूज करना है। बाकी सॉल्ट्स आप कभी कभी थोड़ी मात्रा में यूज कर सकते हैं। दूसरा है इस सॉल्ट को स्टोर करना, इसके लिए हमेशा एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना है, उसे खुले डब्बे में या ढीले डब्बे में बंद कर नहीं रखना है, और देखना है कि इट शुड बी स्टोर्ड इन अ ड्राई प्लेस, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए एंड डायरेक्ट हीट नहीं होनी चाहिए। और कभी भी आप पैकेट खोलते हैं तो उसको 6 मंथ्स के अंदर यूज कर लें, और उस पैकेट को खुला बंद नहीं करें, उसको हमेशा एयर टाइट कंटेनर के अंदर ही रखें, then only the iodine part of the salt वो आपके लिए यूजफुल रहेगा, otherwise it will not help you. सप्लीमेंटेशन इज जब आयोडीन कुछ रिमोट एरियाज जहाँ पर हम आयोडाइज सॉल्ट को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते या जहाँ पर सॉल्ट आयोडाइज सॉल्ट नहीं बन पाता, ऐसी कंडीशंस में हम आयोडीन को ऊपर से दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल्स और इंजेक्शंस होते हैं एट द रेगुलर इंटरवल्स, तो वो डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से हमें लेने हैं। एंड इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायरॉइड, अगर ऑलरेडी आपको डायग्नोस्ड है कि आपका थायराइड की कमी है, तो आपको थायरोक्सिन टैबलेट्स जैसे डॉक्टर ने एडवाइस किया है आपको लेना है। ये टैबलेट्स भी आपको एयर टाइट बिल्कुल टाइटली बंद करनी है, कोल्ड प्लेस पर रखनी है, और बीच बीच में अपना थायराइड हार्मोन चेक कराना है ताकि वो नॉर्मल रहे। हेल्थ एजुकेशन इज अनदर इम्पॉर्टेंट एरिया कि हमें एक दूसरे को अवेयर करना है कि व्हाट आर द आयोडीन रिच फूड्स दैट वी कैन, कौन कौन से आयोडीन फूड हम खा सकते हैं, या फिर हम आयोडाइज्ड सॉल्ट को ही कंज्यूम करें। तो जितना अवेयरनेस हम बढ़ाएंगे उतना ही हम आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स को कम कर सकते हैं। देन अ स्मॉल वर्ड अबाउट द नेशनल प्रोग्राम्स, तो हमारी गवर्नमेंट भी इसके लिए काफ़ी काम कर रही है। So there is a project called as a National Goiter Control Program, which was started in 1962, and later on it was renamed as National Iodine Deficiency Disorder in 1992. Recently, one survey, National Iodine and Salt Intake Survey, was also done in 2015, and India is a major contributor or major follower of the Universal Iodization Program.
the main in जो programs conduct करते हैं इनका main aim है देखने का कि how much whether हमारा iodized salt proper amount में बन रहा है and it is going to the all levels and to see whether it is effective कितना हमारी iodine deficiency कम हुई है and also to educate the people regarding the iodine deficiency disorder. And achievements के लिए अगर हम देखें तो Ministry of Health shows that 70% of the population in the country has access to adequately iodized salt. तो 70% to 80% हमारे population consume कर रही है iodized salt को. So this is just to show the coverage, household coverage, and the target is to make it 100%. Now this is अभी तक तो बताया कि आयोडीन डेफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है और उसके कारण जो भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इन सारी प्रॉब्लम्स का बचाव है, बट आयोडीन एक्सेस मात्रा में भी नहीं लेनी है क्योंकि एक्सेस आयोडीन लेने से भी हमें थायराइड के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, आपको हाइपोथायराइड हो सकता है या ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज होने का चांसेस है. इसलिए यू हैव टू कीप अ बैलेंस, आयोडीन डेफिशिएंसी भी बचानी है और आयोडीन एक्सेस भी बचाना है. So before concluding, I would like to say just that iodine deficiency disorders or mental retardation, it is actually preventable. हम इसे बचा सकते हैं अगर हम आयोडीन की मात्रा अपनी डाइट में और आयोडाइज सॉल्ट को कंज्यूम कर इसको बचा सकते हैं. थैंक यू. Over to Hemant sir, please. Now is the time. Thank you very much, Dr. Purnima, for the wonderful disposition on this very relevant and topic of thyroid illnesses. I'm sure there are a lot of questions in the chat box, but most of them are repetitive. So to sum up, I will ask without naming the people asking. Suppose a person, a hypothyroid, forgets his morning dose, his or her morning dose, and they remember it maybe at around noontime, lunchtime. So are they to take it? Are they to skip it? Or suppose they remember it in the evening time. So what do they do? Do they take the double dose next day? Do they take the dose the same day? Dr. Purnima? Dr. Purnima, can you hear me? Dr. Purnima, am I audible? Ma'am, you have to unmute yourself first. Yes, sir. Yes, sir. I am audible now. Yes, yes. Yes, sir. Sir, actually, it is a very relevant question and it happens day to day. अगर this is के अगर आप भूल जाते हैं आज का tablet, तो one thing we advise कि next day you can take the double dose of the tablet, or you can take आप 4 घंटे का fasting रखकर and you can take the tablet, and after that 1 hour of fasting you can take your meals. So, but you should not skip your doses. So if you forget the same dose on this day of the you're supposed to be taking, you either fast for 4 hours, take it on the same day, or take double the dose on the next day. Yes, sir. Yes, sir. Okay. But don't miss it. Don't miss it. Okay. And ma'am, there is another very interesting thing that I wanted to ask you was that tea and coffee, people are in the habit of taking tea and coffee early in the morning without even breakfast. They call it bed tea. So how many hours of should lapse between thyroid hormone supplementation and morning beverage? Yes, sir. Actually, we advise for 1 hour ताकि उसका absorption properly हो जाए. So what normally I advise to the patient that if they can get up at 5 o'clock, just put an alarm and get up at 5, take your tablet and sleep so that by the time you get up again, you can have your bed tea. तो 1 घंटे का गैप तो रखना ही है हमें.
तो दैट इज वन वे कि आप कर सकते हैं. जस्ट पुट एन अलार्म और 4 o'clock 5 o'clock आपकी नींद खुलती है, तो टेक दैट टैबलेट एंड यू कैन गो बैक टू स्लीप. Wonderful. Otherwise 1 hour gap is needed. And people want to ask that in 15 days, their TSH values have gone from 30 to 6.8. Is it possible? Well, Yeah. everything is possible. But yeah, but Dr. Purnima will answer. हाँ, नहीं, it is possible in 15 days because normally पूरा ठीक होने में it takes 1 month. तो TSH हम normally बीच में repeat नहीं करते, but yes, it can fall. If you are on a proper dose, it can fall. Yeah, I would like to add a little postscript note to it. That is, according to the NICE guidelines, one must, suppose your dose has been changed, the first repeat TSH is to be done after 6 weeks, then after 3 months, if the steady state has been achieved. Yes. So I hope, ma'am, you concur with it, and then after once every 6 months. Yes, sir. Actually, when we change the dose, we repeat it after 4 to 6 weeks. And then once it is stabilized, then you can do every 3 monthly and then 6 monthly. And if it is very stable, then you can do one in a year also. Yeah, so 6 weeks, 3 months, and then if stable, once in 6 months, and if very, very stable for a long time, maybe once a year would suffice. Yes. So, ma'am, thyroid hormone also has a role to play in the vitamin D and calcium metabolism, because thyroxine is not just the only hormone it secretes. So, you think in your opinion, hypothyroid should also be taking vitamin D and calcium? Sir, we do advise because vitamin D deficiency as such also is common in the hypothyroid people. So we advise them to take vitamin D, and calcium normally I advise to take in diet unless it is really low. Okay, fair enough. Now people have started opening up with questions of all sorts, and they are just showering their questions. Just a minute, ma'am. Well, one of the few actions of thyroxine is an increased heart rate. So if you take a dose in excess, or if your dose has suddenly been upstepped, you're bound to face probably experience some amount of palpitation. That is not very unusual. However, if it is causing a real trouble, maybe you can consult your doctor, I think, because there's a question from among the audience that I feel my heartbeat increased. Is this a normal symptom? Normally, actually, sir, when we are giving normal doses, then it should not increase. Occasionally, you may get palpitation, but if it is more in amount, then only it produces the palpitation. So if you are getting palpitation and on and off, then it is better to consult the doctor. Sometimes it could be other reason. It could be something else related to heart, may not be related to the thyroid. तो दिखाना better रहेगा. But occasional palpitations you can have. One very relevant question, just like on the day of testing sugar in diabetics, after the first sample, before taking the breakfast, they have to take their normal sugar controlling medications. Likewise, is it so that before TSH estimation, they have to take the medication, or they can skip? There is a question in the chat box like that. Yes, sir. Ideally, we say that don't take medication because if we want to see the T4 level, actually we test for T4 TSH, so it usually alters T4. तो शुरू के टाइम पर हम बोलते हैं कि आप टैबलेट मत लो and you test in the morning fasting and give the results. But later on, even if we take the tablet, it does not affect the results. But it is better not to take.
So if it is only TSH estimation, it can Then be you can done. It need not only be done in the morning, is it? It has to be done in the morning. It has to be done in the morning hours, but you may take your tablet. So our viewers, please take note that unlike your diabetes medicines, on the day of testing of thyroid values, your TSH thyroid function test, you don't have to take your thyroid medication. However, in case of diabetes and sugar test estimations, after having given the fasting sample, you are, like on all other days, supposed to be taking your sugar control medications just to see how much sugar is being controlled by the regular dose of your medication. So there is a difference between sugar testing and thyroid testing. Yes. I hope our audience is better informed and empowered after this webinar. And since there are yes, there's a question that has come is when should I go in for anti-TPO testing? Anti-TPO? Anti-TPO, yeah. Anti-TPOs are normally because nowadays autoimmune phenomena is the major cause of hypothyroidism. So we do in the beginning, जब आपको thyroid पता चलता है, at that time we advise anti-TPO test और हमेशा एक ही बार कराते हैं, कभी कभी हमें 2 बार कराना पड़ता है. So the message to the audience is that anti-TPO is not something that is to be done routinely. It is just done to ascertain the possible cause of the malfunctioning or the hypofunctioning thyroid, and it is very rarely done subsequently because it has, if at all any, very little bearing on the treatment of the thyroid illness. It is not like HbA1c that has to be done very periodically. So sometimes anti-TPO levels comes very high, तो patients थोड़ा डर जाते हैं. But it is nothing to do with the disease. It is just that you are prone for thyroid और आपको lifelong treatment लेना पड़ेगा. Yes. So I hope the questioners, interjectors question can the time be altered? It follows Dr. Purnima, your inputs on this question. Which one? Can the time of taking thyroid medication be altered during the day? Sometimes, sir, we can alter, like अगर आपका that is what night time you can take. As I said, 4 hours fasting we need. So in night time, suppose you have taken your dinner at 9 o'clock, so you can take your tablets by 12 if you sleep late, 12 or 1, and that sometimes you can alter. But fasting is important. We need to take in the empty stomach उसके proper absorption के लिए. So 4 hours of fasting is important. So we advise the patient sometimes to take in night. So, let us not get it confused. In the normal run of events, like all other hormones, this also follows a biorhythm, a daily diurnal biorhythm. And if we are supplementing, we should supplement on the same time, preferably on the same time every day. However, if happenstance we happen to forget it or miss the dose, we can, after a period of fasting for 4 hours, take it at any point of time, and preferably not miss the dose. If, however, we miss the dose, we must take double the dose on the subsequent day. So is that all, or would you like to correct the input, ma'am? Yes, sir. That is, you're rightly said. So
in the absence of any further questions, I would like to put on record our heartfelt gratitude for giving your discourse on such a wonderful and very relevant topic, Dr. Purnima. I hope the audience and the viewers stand empowered, and wish you a very happy, all the viewers are very happy Vaisakhi, Bihu, and whatever local festival in different parts of the country it has. So till next seminar is organized, wish you all stay safe, stay vaccinated, don't hesitate, get vaccinated, observe the precautions of safe distancing, masks and hand sanitization, and go out only if you must. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you. सारा कबाड़ा हो गया कुछ